couldn't have asked for anything better. Ma'am, inside the court, I mean, this is going to be probed by the Lokayukta police itself. But you see, with the Chief Minister right now being in that position, how do you see this all panning out, in fact, for the transparent investigation that you are asking for? We're just hopeful that Lokayukta is transparent and fair in the investigation. And if that's the case, I think truth will prevail. Ma'am, initially you asked for, I mean, there was about a 6 months and then you come up to tell 3 months, ma'am. No, we requested the court for, say, 3 months in view of the fact that I think the documents and the evidence provided is quite comprehensive, and I don't think the police would be required to, go about all over searching for evidence. It's all right there before them. So I was of the opinion that 3 months. The opposition Bharatiya Janata Party continues to demand the resignation of Karnataka Chief Minister Siddaramaiah in regard to the alleged Muda scam. Reacting to this, Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar on Wednesday said investigation has been ordered by the court. He also asked why the BJP is not demanding the resignation of the leaders against whom charge sheets have been filed. Pardon? After the court decision, BJP leader are saying Siddaramaiah resignation, sir, demanding his resignation. See, investigation has been ordered by the court. Let investigation take up. There are charge sheet against various ministers, MLAs of BJP government also in the entire country. Why they are not demanding the resignation of them? What do you think, sir, governor is targeting only Congress leaders? It has already been open secret. What is the stand, sir, with the party's high-command, sir? In the rupees 3,600 crore AgustaWestland chopper scam case, the Delhi High Court on Wednesday rejected the bail plea of British national Christian Michael James, the alleged middleman in the scam. Michael sought regular bail in the case being investigated by the Central Bureau of Investigation, which pertains to the purchase of 12 VVIP helicopters for the Indian government. While his plea for regular bail in the CBI case has been rejected, Michael's bail plea in a related Enforcement Directorate case is pending before the Delhi High Court, and the court has rescheduled the hearing for arguments in that case to November 18, 2024. The ED case involves money laundering charges linked to the bribes allegedly paid during the helicopter deal. This case remains under intense scrutiny due to its high-profile nature and international connection. Michael was arrested in Dubai following the issuance of non-bailable warrants in 2015 and a subsequent red corner notice. He was extradited to India on December 4, 2018. The trial court pointed out that Michael had not voluntarily appeared before the court or cooperated with the investigation, making him a flight risk. Thus, he could not claim parity with other accused individuals who were granted bail. Weeks after Nagaland cabinet denied permission for the Gaudaj Stapana Bharat Yatra that aims to promote a nationwide ban on cow slaughter, Swami Avi Muktesh Varanand Saraswati, who is currently in Sikkim for the Yatra, mentioned the issue at an event and said he was only seeking a chance to convey his message to the people and had not harmed or spoken ill of anyone. He appealed the chief ministers of Northeast states not to obstruct his Yatra and concluded that if he is not allowed to speak about the sanctity of cows, then he should be shot. नागालैंड जो प्रदेश है आपके उत्तर पूर्व का, वहां की सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुला करके और आदेश पारित कर दिया कि शंकराचार्य जी नागालैंड में प्रवेश नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसके कारण उनको आप प्रदेश में घुसने से ही रोक रहे हो? हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हमने किसी के विरुद्ध कोई बात कही होती, किसी को गाली दी होती, किसी को डांटा होता, किसी को फटकारा होता, किसी को दोषी बताया होता, तब आप अगर हमको रोक लगाते तो हमको ठीक लगता। लेकिन हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हम तो अपनी बात कहने के लिए हमारे देश के जितने निवासी हैं, क्या हम उनसे उनके पास जाकर के बातचीत नहीं कर सकते? क्या हम उनसे संवाद नहीं कर सकते? जैसे वो कहते हैं कि हम तो गाय खाएंगे, क्या हम वैसे वहां पर जाकर के उनके सामने नहीं कर सकते, भैया हम बचाएंगे? इतना कहने के लिए हमको क्यों नहीं छूट दी गई? और हम अपनी भावना जब उनसे कहेंगे
और वो अपनी भावना जब हमसे कहेंगे तभी तो दोनों के बीच में बातचीत होगी और कोई रास्ता निकलेगा। अगर वो अपनी जिद पर अड़े रह गए और हम भी अपनी जिद पर अड़े रह गए तो क्या हम लोग एक हो पाएंगे? क्या ये देश एक हो पाएगा? तो इस देश में एकता का संचार करने के लिए भी जरूरी है कि देश के प्रत्येक नागरिक के सामने जो प्रश्न है वो उपस्थापित किया जाए और वो उसमें विचार करे। विचार करने के बाद उसको भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है जितना हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो आज सिक्किम के इस टंगटोक राजधानी से उत्तर पूर्व के सभी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो वहाँ के सरकारें हैं, उनसे हम आप पत्रकारों के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमको आने से मत रोकिए। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। हाँ, अब हमारी एक अपनी धारणा है, हमारी एक अपनी भावना है जो हमारे से ही उत्पन्न नहीं हुई है, हमारे पूर्वजों से चली आई है और उसको हम आपके सामने कहना चाहते हैं। और हम आपको दोषी नहीं कह रहे हैं। आपकी जो समस्या है उसको भी सुनने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस बारे में आप हमारी भावना का सम्मान करें और हम आपकी परिस्थिति का सम्मान करें और मिल करके कोई रास्ता निकालें, ताकि ये जो भारत सरकार के सामने बहाना है कि हम हिंदुओं की इस भावना को स्वीकार नहीं करेंगे कि कुछ प्रदेश इस बारे में विरोध करते हैं। देखिए, अगर हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि देश बहुमत से चलता है और बहुमत तो सनातन धर्मियों का है देश में। तो आज नहीं तो कल अगर जागृति हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि बहुमत जो कहेगा उसको अल्पमत को मानना ही पड़ेगा। लेकिन मानना पड़े और इसमें और हमने आगे बढ़ करके रास्ता निकाल करके बना लिया रास्ता, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। तो हम ये चाहते थे कि यहाँ के लोगों के साथ हम संवाद करें, एक बार बैठें, दो बार बैठें, बार बार बैठें, कोई ना कोई रास्ता तो हम लोग जब बैठ जाएंगे और ये सोच करके बैठेंगे कि हमको रास्ता निकाल लेना है तो निकल ही जाएगा। तो इसलिए आगे के प्रदेशों की यात्रा भी हम करेंगे और वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करने की चेष्टा करेंगे। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो हमारा शास्त्र है, उसको भी छोड़ करके हम जीना नहीं चाहते। We'll take a short break. Keep watching. The ABC for HIV prevention. Welcome back. Former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot's ex-OSD Lokesh Sharma was on Wednesday questioned by the Delhi police in connection with a phone tapping case lodged on a complaint from Union Minister Gajendra Singh Shekhawat. He has publicly alleged that an audio clip of a purported telephonic conversation between Shekhawat and some Congress leaders on toppling the then Congress government in Rajasthan in 2020 was given to him by the former Chief Minister himself. Sharma's claim has marked a shift from his previous stand that he had got 3 audio clips from social media and forwarded those to news organizations. In March 2021, the Delhi police registered an FIR against Sharma on charges of criminal conspiracy, criminal breach of trust and unlawfully intercepting telephonic conversations on a complaint from Shekhawat. This is Sharma's 5th appearance before the crime branch for questioning. He was last quizzed by the crime branch sleuths on October 10, 2023. हालात क्या समीकरण बदले हैं? देखिए, पहले भी मैं कई बार दिल्ली पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और मुझसे जब भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है, मैंने हर बार ये प्रयास किया है कि मैं पूरा सहयोग करूं। अगर किसी नोटिस के एवज में मैं नहीं आ पाया तो मैंने उनको लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया कि मैं किन कारणों से नहीं आ पाया हूं।
अभी हाल ही में मुझे जो नोटिस मिला, आज 25 तारीख को सुबह 11 बजे दिल्ली क्राइम ब्रांच में उपस्थित होने के लिए मुझे निर्देश या कह सकते हैं कि मुझे जो सम्मन मिला है, मैं उसी की अनुपालना में आज क्राइम ब्रांच पहुंच रहा हूं और जो भी घटना घटित हुई थी फोन टेपिंग से रिलेटेड, उसका ब्यौरा पूरा का पूरा मैं दिल्ली पुलिस को आज देने वाला हूं। करीब 10 बार नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर आपको ऑडियो क्लिप कैसे मिली और आपके ऊपर आरोप है कि आपने उसे वायरल किया। देखिए, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। ना तो मैंने फोन टेप किए और ना ही मैं उस पूरे, कहते हैं ना कि वो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता कि मैं किसी के फोन टेप करवा सकूं। मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक पेन ड्राइव के माध्यम से तमाम ऑडियो क्लिप्स दिए थे और वो मैंने उनके निर्देशों पर वायरल किए, क्योंकि मुझे पूरे तरीके से ये कहा गया था कि ये इस ऑडियो क्लिप्स को या इस टेप में जो भी है पेन ड्राइव में, वो सारी की सारी चीजें आप मीडिया को और पूरे प्रदेश की जनता को वायरल करें। तो मैंने उसी आदेश की अनुपालना में वो सारा काम किया था। लेकिन अभी तक आपको सोशल मीडिया से मिले थे ये सारी क्लिप? वो मुझे निर्देश थे, इसी तरीके के निर्देश मुझे दिए गए थे, क्योंकि मेरी लास्ट जो यहाँ पे हियरिंग हुई थी, जिसे कह सकते हैं कि पूछताछ हुई थी, वो अक्टूबर में हुई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और मैं उनका ओएसडी था। तो जो भी मुझे निर्देश दिए जाते थे मैं उनका पालना करता था और उसी कड़ी में मैंने वो सारी चीजें उस रूप में वहां कही थी। आज मैं पूरा का पूरा सच दिल्ली पुलिस को बताने वाला हूं। अगर मुझसे किसी भी तरीके के सबूतों की आवश्यकता होगी तो वो भी मैं सहयोग। Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal, while commenting on Make in India impact on exports and imports on Wednesday, said that imports, which for a long period of time were stagnant, have been increasing significantly post-COVID. He claimed that India was seeing newer destinations for export goods and agriculture and marine exports are growing dramatically. He also mentioned that electronics is the third largest export sector from India. India's exports, which for a long period of time were stagnant, have been increasing post-COVID very significantly, both in merchandise and in services. The world today recognizes that the scale at which you can produce and export from India is mind-boggling, and the competitiveness of costing the product is also very attractive. India today offers both a domestic demand, and with that domestic demand and large scale, we become competitive in other nations. I am very confident that this thrust given to export, including making districts as export hubs, will hold India in good stead. We are seeing newer and newer destinations for our export goods, newer and newer products. We are seeing our agricultural exports, marine exports grow up dramatically. Thanks to the production-linked incentive schemes, we are now seeing mobile phones grow so much so that electronics is now the third largest export sector from India. So all in all, we can clearly see that Make in India has been the fulcrum of significant benefits in export from India, innovate in India, design in India, serve from India, come to India as a tourist. So it's been an incredible journey of 10 years and great relationships that Prime Minister Modi has built across the world. I congratulate him on this very successful trip to the United States of America, a historic visit. The Modi and Us, the Modi and US program was a grand hit at Long Island. The Quad meeting at President Biden's home in Delaware, where 4 world leaders discussed the geopolitical and strategic relationship that we all share, and his own engagement with world companies and CEOs of Fortune 500 companies. All of the programs in the United States have further encouraged investment and manufacturing in India. A delegation of senior diplomats from countries including the US, Norway, Singapore and South Korea is visiting Kashmir on Wednesday, reached a polling station in
Bamina area of Srinagar to witness the ongoing assembly elections. This marks the first time that foreign diplomats have been invited by the Indian government to observe elections in the Union Territory. According to the sources, the government's intent behind this is to showcase the peaceful conduct of the electoral process and the large-scale participation of the people in the polls. The 20-member delegation includes representatives from the US, Mexico, Somalia, Nigeria, South Africa and several other nations, as well as 4 officials from India's Ministry of External Affairs. Most of these countries are represented by the Charge d'Affaires and Deputy Chief of Missions. The diplomats is visiting constituencies in the Srinagar, Budgam and Ganderbal districts, which are voting in the second phase of the assembly elections. This diplomatic visit comes as Jammu and Kashmir holds its first assembly election since the abrogación of Article 370 in 2019, which stripped the region of its special status and split it into 2 union territories. The central government aims to use the visit to emphasize the normalcy and stability restored in the region. Yeah, first time here. It's very beautiful. It's wonderful to be amongst the people who are actually here to cast their votes. I see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working, you know. So congratulations, you know, for well-organized polling station. And I was happy to see little kids with their parents. You know, the kids are here, even though, you know, they can't vote, but I think they're here to learn from their parents, right? How democracy works. So that was really impressive. This is your first visit to JNK? Yes, very beautiful. Thank you. Beautiful weather too. What's the name and which country you are? I'm from Korea. I'm Lim, DCM, Deputy Chief of Mission of Korea. Lim. Thank you so much. Yeah, thank you. We have been visiting 1 polling station. This is the second. The organization is smooth, and we are told it has started 7 to the end at 6. And so far, the percentage here is 10% who have already cast their vote, and they are expecting everyone to come, and the whole exercise will end at 6 when everyone has been already at the polling station to exercise their civil rights. This is your first visit to JNK? Yes. What's the name, sir, and which country you are? Mr. Emil. Which country? Rwanda. What I see that people are just excited to vote, and they're bringing children so that they can start learning how the democratic process is. This will be the very good voters later, because they are learning the process. They're still when they're still little kids. So this is so fascinating to me. I have never seen this kind of practice before. This is my first time, so it is satisfying. We'll take another short break. Keep watching. What you see, what you hear makes a difference. Correct information about HIV helps you make better decisions. Welcome back. As people of Jammu and Kashmir cast their votes in the second phase of assembly elections, a high-level delegation of senior diplomats from different countries were brought to witness the election process, which is taking place for the first time after the abrogation of Article 370. Commenting on this, Jammu and Kashmir National Conference Vice President and candidate Umar Abdullah said, when these same people comment on Jammu and Kashmir government of India says it was an internal matter and should not comment on it, but now they have been brought here. He also questioned the government and asked if diplomats could be brought to the Union Territory. Why are foreign journalists not allowed to come and cover the elections? ये डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता
यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमैट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमैट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। In a significant advancement for railway safety, the railway minister conducted 7 successful tests of the Kawach system on Tuesday, travelling from Rajasthan Sawai Madhopur to Sumerganj Mandi sections of Kota division of West Central Railways. The installation of Kawach, which is currently underway across the country, includes Kawach 4.0, which was approved by RDSO on July 16, 2024. The inspection has now been completed for some distance beyond Savai Madhopur. The minister said Railway Minister Ashwini Vaishnav conducted a series of 7 tests of the Kawach safety systems on the route from Savai Madhopur to Sumerganj Mandi section of Indian Railway on Tuesday. These tests includes the control of train at home signals, speed regulations in the section, loop line control, emergency response, cab signalling test, level crossing, gate safety and signal passing at danger. The successful execution of these tests underscores the Kawach system's potential to significantly improve railway safety. A senior railway official emphasized that such technological advancements are crucial for the protection of passengers and crew, paving the way for safer rail travel across the network. कवच का जो इंस्टॉलेशन अभी देश भर में चल रहा है, उसमें कवच 4.0 जो कि 16 जुलाई 2024 को आरडीएसओ ने अप्रूव किया था, अभी उसका सवाई माधोपुर से कुछ डिस्टेंस आगे तक इंस्पेक्शन पूरा किया और इससे बहुत ही अच्छा इसका इंस्टॉलेशन है, बहुत ही अच्छे इसके परिणाम है। मैं ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्राइवर साहब आप अपना अनुभव बताएं। अनुभव बताइए ड्राइवर साहब। सर, हमारे लिए रेलवे के लिए तो क्रांतिकारी बदलाव है। ये जो कवच जो हमारे लिए लगाया गया है, इसमें कवच लगाने से हमारे रेलवे में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। इससे मानवीय भूल से किसी भी प्रकार की छोटी मोटी जो दुर्घटना होने की संभावना है वो होने की कोई संभावना नहीं है। और गाड़ी अगर ओवर स्पीड होगी उस वक्त भी गाड़ी को अंडर लिमिट ले आएगा और आमने सामने की टक्कर इस टाइप की किसी भी घटना को होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अभी देखा दूर से जैसे 5-6 किलोमीटर दूर जो सिग्नल है, वो सिग्नल भी कवच में ड्राइवर साहब को पहले से ही दिखाई दे जाता है। यानी अगर हम ह्यूमनली सोचें तो हमको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन कवच के कारण कवच से जो 3-4 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी पहले ही कैब में ड्राइवर को दिखाई दे जाता है। साथ ही मान लो सामने डबल येलो आई है, यानी स्पीड कम करना है, येलो आई है यानी स्पीड को और कम करना है। बाय चांस अगर ड्राइवर साहब वहाँ पे ब्रेक लगा के स्पीड कम ना करे तो कवच ने ऑटोमेटिकली स्पीड को कम किया। और जो आगे अगर रेड लाइट आती है और रेड लाइट यानी रुकना है, तो रेड लाइट से पहले अगर ड्राइवर साहब ऑटोमेटिकली अपने आप स्पीड कम कर देते हैं, अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो कवच उसमें कंट्रोल ले लेता है और गाड़ी की स्पीड को कम करके, अभी हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखे जिसमें 50 मीटर के आसपास डिस्टेंस पे रेड लाइट से पहले कवच गाड़ी को अपने आप पूरा स्टॉप कर देता है।
फिर कोई अगर फाटक आती है रास्ते में, तो फाटक आने से पहले ही कवच विस्लिंग की जो साउंड है, फाटक से गुजरने के टाइम बाकी सब लोग चौकन्ने हो जाएं, इसके लिए कवच उसमें विसल ऑटोमेटिकली कर देता है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, इससे ड्राइवर्स की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और रेलवे की सेफ्टी में बहुत बड़ा एक अच्छा परिणाम आएगा। मैं ड्राइवर साहब का एक्सप्रेशन देख रहा था जब गाड़ी चला रहे थे आप। कवच से जो एकदम रिलीफ मिलता है कि एक बहुत ही अच्छी सुविधा साथ में मिल जाती है। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV. Good night. Because sometimes news is more than mere information. And we all need a little more clarity and the details. About live people and events that really matter. For individuals that demand reliable news. From reliable news organizations and credible and award-winning journalists. And how we look at the world. This is exactly the reason why we strive to serve you and the society. Because proper news can not only inform our lives,